ब्रीदिंग सीखने में करीब 6 महीने लगते हैं, और स्वामी जी तो ऐसे ऐसे करते हुए थोड़ा सा सिखा देते हैं ऊपर ऊपर से। ऐसे में फायदा ब्रीदिंग में, चलो वो 6 महीने कह रहे थे, मैं आपको 6 मिनट में सिखाता, यही मेरी खूबी है। मैंने ये 6 महीने ब्रीदिंग सिखाने वाले, इन्होंने योग का भट्ठा बैठाया। अब 6 महीने बाद भी ब्रीदिंग सीखेगा। योग को के 3 अवरोध थे राहुल भाई, गुफा, ग्लैमर और जटिलता। हमने गुफाओं से, ग्लैमर से और जटिलताओं से बाहर निकाल करके योग को मैदान में ला करके खड़ा कर दिया, और आज करोड़ों लोग योग कर रहे हैं। ये कि 6 महीने में सांस लेना सीखेंगे, लो अभी सिखाता। ये कोई प्रतिस्पर्धा वाली बात नहीं है, और आपको भी सिखाता हूं। चलिए श्वास लीजिए, छोड़िए, ऐसे, ये भस्त्री का हाथ ऐसे रखिए, थोड़ा और लंबा लीजिए, कुर्सी पर बैठे वाले भी कीजिए, कुर्सी कहीं जाने वाली नहीं है। इतना सरल है, कुर्सी पर बैठे हुए भी कर सकते हैं, नीचे बैठे हुए भी कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई बीमार है, बैठ ही नहीं सकता, तो कैसे करेगा? वो लेट के भी कर सकता है। यही मेरी विशेषता है, लेटे लेटे श्वास लिए, बैठे और फिर दौड़ने लग गए। ये योग क्यों है? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि लोगों ने योग को इतना जटिल बना दिया था। अब देखो दूसरा, ये तो एक ब्रीदिंग हुआ ना, इसको कहते हैं डीप ब्रीदिंग। संस्कृत में इसका प्राणायाम में नामकरण किया गया भस्त्रिका। अब सेकंड ब्रीदिंग सिखाता हूं। मुंह बस बंद रखो, एक ही त्रुटि हो रही है। नहीं, बाकी आप परफेक्ट है, आपका स्ट्रोक बहुत जोरदार लग रहा है, आप बॉडी रॉक हो ही जाएंगे यार। राहुल भाई एक दिन में सीख गए, ऐसा ही राहुल गांधी भी सीख जाता तो कितना अच्छा। आपको 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 कैसे मालूम वो योगा नहीं करते? तो सुनो, देखो ये दूसरी ब्रीदिंग हो गई, 2 ही मिनट हुए हैं, अभी 6 मिनट हुए, अब 4 मिनट बाकी है। वो कहते हैं ना 6 महीने लगते हैं, आप उनको मेरे सामने बैठाते तो उनको भी मैं 6 मिनट में सिखा देता। अच्छा दूसरी, अब ये 2 होगी ब्रीदिंग। अब तीसरी ब्रीदिंग, वो मैं कहता हूं सब नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, पेट थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। ये तीसरी ब्रीदिंग जिसमें 3 बंद लगते हैं, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद। कितने बोलो? देखो सबको पता है। आपको थोड़ा सा इसमें कठिनता होगी, फिर भी आप हिम्मत कर रहे हैं। तो आप अग्निसार कर रहे हो, आप अलग कर रहे हो। अब ये अग्निसार है, आप अग्निसार अच्छी कर रहे थे। अब इसको घुमाने वाली में दिक्कत है। ये मैं सबको नहीं बोलता कि सब ऐसा करें। ये थोड़ा कठिन है, तो मैं सबको बोलता ही नहीं कि इसको करना है सबको। ये नोरी क्रिया है, ये प्राणायाम है भी नहीं, ये ब्रीदिंग नहीं है। अब उज्जाई ब्रीदिंग करवाता हूं मैं। गले और थायराइड की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है, और मोटे मोटे खर्राटे भी बहुत जोर से मारते हैं। स्नोरिंग, स्लीप एपनिया क्योर हो जाता है, थायराइड क्योर होता है ना। मेडिकल साइंस में क्योर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, कंट्रोल। और आयुर्वेद में, योग में, इसमें भी क्योर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। योग वाले तो बोलते थे हम तो ध्यान कराएंगे,
मैं कहता हूं ध्यान तो है ही योग, लेकिन उसके पहले भी तो सीढ़ियां हैं योग की, बहुत सारी स्टेप्स हैं। हम थायराइड को क्योर करते हैं, बीपी को हम क्योर करते हैं, हम कोलेटरल आर्टरी खोल देते हैं या मेन आर्टरीज ओपन हो जाती हैं, हम योग से हेपेटाइटिस को क्योर करते हैं, और ये हमने करके दिखाया है, पूरे साइंटिफिक एविडेंस है। पर कभी कभी ज्यादा भी बोल देते हैं, ये भी कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी क्योर हो सकती है, कैंसर क्योर हो सकता है, मतलब जितना है उतना। कौन बोल रहा था कि ये तो कई का खबरें आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं। नहीं, मतलब इसका विरोध कौन कर रहा था? कोई बाबा तो नहीं कर रहा था ना? हाँ, नहीं, इसमें कोई बाबा नहीं है, इसमें दूसरे बाबा हैं जो दूसरी बात नहीं। पर ये आप बताइए, अगली बात करता हूँ, ब्रीदिंग। ये एक ब्रीदिंग है, ये थायराइड के लिए बहुत अच्छी है। अनुलोम विलोम कितनी सरल ब्रीदिंग है, ये स्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पूरी दुनिया परेशान है, कैसे करें इसको मैनेज। हमने पहली बार वर्ल्ड में 9 दिन का एक कैंप रखा एसजीपीजीआई लखनऊ के सहयोग से, हम खुद थे उसमें, पतंजलि योगपीठ में। करीब हमने इसमें 3 से 5 करोड़ रुपए के बीच में इसका हमने खर्चा किया उसके ऊपर। विदेशों से किट मंगवाई, क्योंकि हार्मोन सेट करने के लिए हमारे यहां पर कोई किट नहीं है। तो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटिक एसिड, बीटा एंडोर्फिन, ये सारे हार्मोन्स हमने चेक किए। 9 दिन के बाद आप भी देखो, ये मुद्दा आपने मीडिया में बहुत ट्रेनिंग ली है, आज मेरी ट्रेनिंग ले लो। सुनो राहुल, इधर उधर उंगली रखने की जरूरत नहीं। देखो ऐसे, ये दाएं नाक को ऐसे बंद कर लो, बाएं से श्वास ऐसे लो, आराम से, बहुत इजी। करीब 5 सेकंड लगेंगे बाएं से लेने में, दाएं से 5 सेकंड में छोड़ दो, फिर दाएं से लो, बाएं से छोड़ दो। आप एक अच्छे पत्रकार होने के साथ एक अच्छे योगी भी हो गए, मैंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए हमारे। इतना जल्दी सर्टिफिकेट भी मिल जाता है? सर्टिफिकेट, अरे वाह, यही तो खास बात है हमारी। इसीलिए तो लोग आपसे परेशान है कि आप जल्दी से योगी बना देते हैं दूसरे को। आज अच्छा, आदमी को दारू पिलाने में कितनी देर लगती है? कब पियो उसी से दारूड़ा शुरू। आदमी को स्मैक की आदत डालने में कितनी देर लगती है? पहले दिन किसी को पिला दो, बाद में अपने आप ही ढूंढता फिरता है वो। जब आदमी को एक दिन में भोगी बनाया जा सकता है, तो एक दिन में योगी क्यों नहीं बनाया जा सकता? होता है ऐसा। एक बार किसी गलत चीज की लत डाल दो, बाद में आदमी उसको ढूंढता फिरता है। तो हमने ऐसी लत डाली योग की कि लोग फिर योग के साथ कनेक्ट हो गए। फिर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हम पैरों को उठाते हैं और आप इसको खाली देख ही लीजिए, चाहे ऐसे सर्वांगासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए। राहुल भी कोशिश जरूर करेंगे, नहीं हिम्मत हारने वाले नहीं। क्या बात है, क्या अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। वेरी गुड। फिर इसी में पीछे पैर ले जाइए राहुल, जितना ले जा सके, जितना ले जा सके, जोर जबरदस्ती नहीं, जितना इजीली ले जा सकते हैं उतना ही ले जाते हैं। फिर पैर धीरे धीरे पीछे टिका देते हैं, हलासन हो जाते हैं। आपने भी टिकाई दिए काफी, तो क्या बात है। भाई मार गए राहुल आपको। क्या? प्रणाम स्वामी जी। लंग फाइब्रोसिस अगर किसी को है, लंग फाइब्रोसिस इनक्योरेबल डिजीज है, कोई है आपके पास? देखिए, मैंने अमेरिका से जो लंग ट्रांसप्लांट करने वाले 2 सबसे बड़े डॉक्टर मेरे पास आए, ये बात है करीब आज से 10 साल पहले की। मेरे से बोले, बाबा जी आपका प्राणायाम करके काफी पेशेंट जो है वो ऑपरेशन से बच गए, वो हमको भी प्राणायाम सिखाइए। तो ह्यूस्टन में मैंने करीब 1 घंटा उन डॉक्टर्स को प्राणायाम बताए, क्योंकि उनके लंग फाइब्रोसिस के काफी पेशेंट ये प्राणायाम करके इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। लंग फाइब्रोसिस में, कैंसर में, एसएलई, एमएस, ऑटोमेन डिजीज में हम कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा से 1-1 घंटा करवा देते हैं। भस्त्रिका 10 मिनट करवा देते हैं। भस्त्रिका 10 मिनट, कपालभाति आधा से 1 घंटा, अनुलोम विलोम आधा से 1 घंटा, और लंग फाइब्रोसिस क्योर हो जाता है। टाइम तो लगेगा।
सामान्य रोगों में पहले ही दिन से तो फायदा होता है। आप 1 महीने में मेडिकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप टेस्टिंग करके महसूस कर सकते हो कि आपकी ये चीजें वेट, फैट, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर ये सब कम हो रहे हैं। पीएफटी टेस्ट करा के नॉर्मली आपका लंग फंक्शन, आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन अच्छा हो रहा है, आप टेस्ट कर सकते हैं। 3 महीने में नॉर्मल डिजीज, ये मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूं जो मैंने लाखों करोड़ों लोगों पर किया है। 9 महीने में पूरी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो 9 महीने कोई भी बड़ी बीमारी है तो योग कीजिए, आपका पूरा रूपांतरण, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं दिव्य जन्म, द्वितीय जन्म। एक भौतिक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म आध्यात्मिक जन्म योग से हो जाता है। ये एकदम पक्की बात है। तो जिनको ऐसे इनकरेबल डिजीज के नाम पर डरा दिया गया हो कि ये बीमारी तो मौत के साथ ही जाएगी, आप उस बीमारी से भी योग से बच सकते हैं और उसको क्योर कर। The title of this session, Nimrat, is How Yoga Transformed Me. So, begin by telling all of us, how did yoga transform? Very many days I feel like a complete schizophrenic. You know, I have. There are many days when you don't have a sense of time, which city you wake up in, what is the right time to have a meal. Often you wake up thinking, which terminal am I in? Am I late for a flight? Am I on a flight? So it gets a little bit crazy, you know. So what yoga has done for me over the last years that I have been practicing it is to just give you that little center, you know, that you can only carry within you, and it's just something that you cannot duplicate in any other way. So it's a sort of a sense of belonging you get no matter which part of the world you find yourself in, which ends up happening a lot in our profession. So let's talk about your journey, where we start with how you discovered yoga and the kind of yoga you discovered, and then we'll take it step by step. Right. So here's a disclaimer. I'm actually in practice far away from where I want to be or where I aspire to be, with it, whether it's my practice or you know, how perfect I'd like myself to be with my kriya or everything else that, you know, I want to achieve. I got very curious about yoga when I read this book called The Autobiography of a Yogi. I don't know how many of you all have read it, but I strongly recommend it. It's one of the most wonderful, magical journeys I have ever read about. And it got me immensely curious about the possibilities of a human body. And this happened to me sometime between school and college. And it was around then that I got immensely curious about yoga. And I joined a class. I don't exactly remember which kind of yoga it was, but something locally in Noida, where I was living at that time. Eventually, I moved to Bombay, and thereon, you know, my curiosity about different forms and kinds of yoga developed and increased a lot, because I had a lot more time to myself. For a long while, you also practiced Iyengar yoga. That I did. For about 3 years or so, I did. So, yeah. What did Iyengar yoga mean to you? Iyengar yoga to me is a very, very beautiful kind of discipline. It's a lot to do with your mind and just how you center your yourself and your being, you know. It was unfortunate I couldn't go on with it as long as I would have liked to. I injured myself doing some acrobats in the gym, which at that time I thought was just the coolest thing to do, and clearly it was not, so I couldn't continue that practice. Kind of broke the flow, and I started traveling a little bit, so I couldn't continue with that. But Iyengar yoga, and I have friends who've been practicing it for about 10 years now, and I can see how, you know, their physique looks different. There's something about them that makes them, I can tell almost when someone practices Iyengar yoga, you can tell. Space, you travel quite a lot. How difficult is it to be able to maintain a yogic routine at a time when you're traveling as much as you are? Yeah, well, you know, that's why the disclaimer. I don't end up practicing my yoga as much as I would like to. Very often, if I'm not in touch for a long time, then I end up forgetting the correct breathing and the correct pose and, you know,
what was it that I was corrected about and I've forgotten now, and then it kind of… So then you come down to doing at least, let's say, a few Surya Namaskars that you can do, you know. That is something that, you know, when in doubt, go back to your Surya Namaskar. That is something that's a major thing that I fall back on. You know, you can decide how many you want to do, 10, 15, 20. Everybody has a number. You know, as long as you do it well, that is something that I often fall back on. There is another thing that, you know, I must mention, and I had the great fortune to meet Sadhguru Jaggi Vasudev this morning. I was initiated into the Shakriya, the Shambhavi Mahabudra, in his inner engineering program about 3 years ago in Delhi. That was something I did purely out of curiosity again, because I'd heard so much about him, and my sister had actually initiated me into it. So that is something that I would strongly recommend. It is absolutely life-changing if it's something that… Do you see attitudes around yoga change between when you started doing yoga? What were the number of young people doing yoga then? Do you think yoga has become more fashionable and more cool now? Yeah, I mean, I don't know, correct me if I'm wrong. I feel like we tend to appreciate something much more when it's embraced a lot by the West. You know, I feel like that has happened a little bit with yoga. I know that people have been practicing yoga for many decades, but for the last some years, I've noticed that it's become amazingly fashionable, as you say. I mean, we have so many centers of yoga coming up, sprouting every now and then in Bombay. I know it's happening everywhere. Whatever be the reason, eventually, as long as people are initiated into this world, you know, whatever be your choice, whichever practice you want to take up, but as long as there's that curiosity and the beauty of yoga, you know, the idea is that you don't need anything. You can, it's just you, physically, all you need is yourself. You can practice wherever you find yourself, you know. We want to start this discussion with the topic that brings us all here, which is International Yoga Day and the scale at which it's being marked this year. Now, Yoga Day happens virtually every year, but has never been as hyped up as it is this year. So let me begin by asking you about what you make of the effort that's being made this time to ensure that Yoga Day is not just a date on the calendar, but is genuinely celebrated and marked the world over. For the first time in modern history, the world is recognizing that ultimately, if human beings have to be well, they have to turn inward. We have looked up, divided humanity in ways that we can't fix in near future. We have looked out in search of human well-being and beginning to destroy the very source of our life, which is the planet. And the only way human beings can be well is by turning inward, because human experience is generated from within. For the first time, leaders of major nations, the world, is talking about the inner well-being of the human being. It is a momentous day, and we have to make it that. So everybody is striving to make this happen. Sadhguru, there's also been a big raging controversy in the build-up to Yoga Day, with several Muslim organizations in particular raising objections to why they have to do the Surya Namaskar, why they have to chant Om, why must they do yoga in the first place. Do you associate yoga with a particular religion, and what do you think of all the objection that's being raised to the idea of what's essentially a Hindu idea being thrusted on the rest of the country? This is a very ill-informed resistance to yoga. One thing that one needs to understand is yoga predates all religion. Its antiquity goes back to 15 millennia. When the idea of religion did not exist in human mind, yoga was. This is an outcome of a profound observation of the human mechanism. This is the most sophisticated gadget on the planet. You say it rocks, it does more than that.
This is the most sophisticated gadget on the planet. The simple question is, have you read the user's manual? Now, yoga means turning inward, reading how to put this to maximum use. When I talk about how to put this to maximum use, right now the simple way of looking at it is, see, most human beings are suffering themselves. Their own thoughts, their own emotions are a big issue. What this means is, the basic faculties which make you human, the basic faculties which set you apart from other creatures, that's become your problem. The only thing that people are suffering is this. People suffer what happened 10 years ago, still. People suffer what may happen day after tomorrow already. What this means is, it is not that you are capable of suffering yesterday and tomorrow, you are just suffering your memory and imagination. Two fundamental faculties which set you apart from every other creature. Or in other words, unconsciously, you're aspiring that you would be better off being a monkey. Or an earthworm for that matter, I don't know what. But the important thing is, yoga is the science of inner well-being. There are technologies for well-being. As there is a science and technology for external well-being, there is a science and technology for inner well-being. Even when the so-called physical or what you refer to as modern sciences came about, the first people who resisted were always the religious people, because they have set beliefs and ideas which doesn't go with anything. Now, yoga does not demand that you have to bow down to anything. This is something we must understand. Yoga means that your well-being is entirely yours. You are not looking up, you are not bowing down to anybody or anything in search of your well-being. Your well-being is entirely created by you. Only at the time of instruction, you have to be with somebody. Once you know what to do, there is no need to bow down to anybody, there is no need to go to anybody. About the Surya Namaskar, the sun salutation is an English translation, an unfortunate translation. Surya Namaskar does not mean sun salutation. See, every life that's on this planet, whether it's an earthworm or an insect or a plant or a tree or a human being or any other creature on the planet, everything is solar powered, we better understand this. So the sun's energy is stored within us. How do we make use of this, is the question. Surya Namaskar is about seeing that your batteries don't deplete too often which is happening to modern societies now. If they skip one meal, there are headaches, there are tension, there are all kinds of anxieties happening within them, because their batteries deplete in no time. You practice a simple form of yoga and see, keeping yourself up for 18–20 hours a day of activity will be just normal for you. This is about getting this to an optimal possibility, this body. When we say body, in yoga we are not looking at body as just a physical thing. All the 5 dimensions of the body of human being is considered a body. Physical body, mental body, energy body, etheric body and the bliss body or the Anandamaya Kosha. Like this, everything is seen as a body because it's a mechanism. How well can you work it? How can you put it to maximum use? You can put it to maximum use only if you are not an issue. Your own faculties are an issue. How are you going to deal with anything around you? Now don't make an issue out of yoga also, please.